Very warm welcome to all of you in this online orientation course on how to approach research in social science, conceptualization and methodological intervention. It is a semester-long program which started in July 2020 and this will last till December 2020. We are towards the end of this program. In November, we have 3 more sessions and this is a 37th session of this program. Today, we have a very well-known geographer with us from South. He is none other but Dr. Mahalingam Bose. Dr. Mahalingam Bose is belonging to the state of Tamil Nadu, right now serving as a faculty in Central University, Karnataka. He is going to give the hand-on training on preparing location map through GIS. Very warm welcome, sir. We are really very happy that you have spared your valuable time with us and you have accepted our invitation. So we are really happy to have you here. Today, the report presentation will be done by Dr. Chandrakanta, both in Hindi and English, and report writing exercise will be done by Dr. Shubhendu Mukherjee, both in Hindi and English. Without wasting any time, I just request Dr. Chandrakanta to present the report of 36th session in both Hindi and English. Dr. Chandrakanta. Dr. Chandrakanta, please unmute. Please present the report. Right, sir. Respected speaker of the day, Mahalingam Bose sir, dear Jitendra Soni sir, Ravindra sir, Sani sir, and all the participants, a very good evening to everyone. I, Dr. Chandrakanta, is presenting the report of the session that was held on 21st November 2020. Before the speaker started his presentation, Monica Bist very nicely presented the report of the session that was by Professor Aslam Mahmood. And now I'm coming to the speaker, Associate Professor Iyata M. Upreti. Iyata M. Upreti is from NBBD College, Gangtok. She is Associate Professor there in Department of Geography. In her 2-hour lecture, she presented on empirical research in social science, skills of fieldwork. She divided her presentation into various sections, which are undertaking research and its origin, characteristics of empirical research, steps in empirical research data collection methods, advantages and disadvantages of empirical research, and lastly, why we need empirical research. While talking in detail, Iyata ma'am explained empirical research is a type of methodology that makes use of verifiable evidences in order to arrive at research outcomes. Empirical research is a type of research which relies on evidences obtained through observation or scientific data collection methods. She also discussed that about what ancient empiricists talked. She discussed that I will not believe it unless I see it. And this phrase laid the foundation of the empirical research. In today's world, empirical research refers to the collection of data using evidence collected through experience or observation or by using scientific instruments. She emphasized on PRA, which is participatory rural appraisal and social mapping. In continuation, she discussed 6 steps to conduct the experiment in empirical research. And if one follows the steps, it can resolve the problem or the obstacles which can occur during the experiments. The steps are: number 1, defining the purpose of the research. Number 2, supporting with the theories and relevant literature. Number 3, creation of hypothesis and measurement. Next is methodology, research design and data collection.
second last is data analysis and results, and the last one is conclusion. Madam also talked that survey, questionnaire, experiment, case studies, observations are some of the empirical research data collection methods. She suggested that one should keep scope for observation whether the questionnaire is open-ended or close-ended, and this will definitely enrich the research. While talking about the disadvantages of the research, empirical research, she mentioned that it is time consuming, it is cost effective, and also sometimes researchers find it difficult to access the communities. And while talking about the advantages, she discussed that it is the flexible and it improves internal validity of the traditional research. And at the end, Renu Punia ma'am presented the recap of the lecture, and the session ended with the question and answer session with the vote of thanks. Thank you, sir. Chandrakanta, please continue in Hindi also if you want. Yes, sir. Right, sir. Yeah. आदरणीय वक्ता महोदय महालिंगम सर, प्रिय जितेंद्र सोनी सर, रविंद्र सर, सैनी सर, एंड यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को शुभ संध्या। मैं चंद्रकांता 21 नवंबर 2020 को आयोजित हुए सत्र का संक्षिप्त विवरण पेश करने जा रही हूँ। यह श्रृंखला में 35वां सत्र था, जिसमें कि हमने आमंत्रित किया था NBBD कॉलेज गैंगटोक से इयाता एम उप्रेती को। इयाता एम उप्रेती मैडम के प्रस्तुतिकरण से पहले हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मोनिका बिष्ट ने प्रोफेसर असलम महमूद द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण का बड़े सुंदर ढंग से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इयाता एम उप्रेती मैडम भूगोल विभाग में कार्यरत हैं, वह एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। अपने 2 घंटे के व्याख्यान में मैडम ने सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य शोध पर चर्चा की। उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में बांटा, जो कि इस प्रकार थे: अनुभवजन्य शोध और उसकी उत्पत्ति को समझना, अनुभवजन्य शोध की विशेषताएं, अनुभवजन्य शोध के चरण, अनुभवजन्य शोध में आंकड़ा संग्रहण के तरीके, अनुभवजन्य शोध के फायदे और नुकसान, अंत में अनुभवजन्य शोध की आवश्यकता। विस्तार से चर्चा करते हुए मैडम ने बताया कि अनुभवजन्य शोध एक प्रकार की कार्यविधि है जिसमें प्रमाणित सबूतों का प्रयोग कर शोध के नतीजों पर पहुंचा जाता है। अनुभवजन्य शोध के द्वारा की गई शोध पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आंकड़ों, संग्रहण प्रणाली अथवा अवलोकन द्वारा संग्रहित प्रमाणों पर आधारित होती है। प्राचीन अनुभववादियों का कहना था कि मैं यकीन नहीं करता जब तक मैं देख नहीं लेता, और यही आधार था अनुभवजन्य शोध का। आज के संदर्भ में अनुभवजन्य से तात्पर्य है आंकड़ों का संग्रहण, जो कि अनुभव या अवलोकन द्वारा या वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से प्राप्त किए जाएं। सहगामी ग्रामीण अध्ययन और सामाजिक मानचित्रण, जिससे तात्पर्य है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड सोशल मैपिंग, पर विशेष जोर देते हुए मैडम ने उनके महत्व को समझाया। अनुभवजन्य शोध में प्रयोग के 6 चरणों का विवरण भी उन्होंने दिया, और उन्होंने यह बताया कि यदि कोई इन चरणों का अनुगमन करे तो प्रयोग के दौरान आने वाली समस्या या बाधा का निवारण किया जा सकता है। ये चरण इस प्रकार हैं: शोध के उद्देश्य को परिभाषित करना, सिद्धांतों और प्रासंगिक साहित्य का समर्थन, परिकल्पना और मापनी, कार्यप्रणाली, शोध रचना और आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और परिणाम, और अंत में उपसंहार। प्रश्नावली और संरक्षण, प्रयोग और मामले का अध्ययन और अवलोकन, यह कुछ प्रणाली के उदाहरण हैं जो कि अनुभवजन्य शोध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वक्ता ने सलाह दी कि शोधकर्ता को सदैव अवलोकन की गुंजाइश रखनी चाहिए, चाहे प्रश्नावली खुले या बंद अंत के रूप में हो। अनुभवजन्य शोध के फायदे के बारे में बात करते हुए मैडम ने बताया कि यह लचीला है और साथ ही पारंपरिक शोध की आंतरिक वैधता को भी निखारता है।
अनुभवजन्य शोध के नुकसानों के बारे में बात करते हुए मैडम ने कहा कि यह अधिक समय लेता है, लागत प्रभावी है और कभी-कभी समुदायों तक पहुंचना मुश्किल होता है। अंत में रेणु पूनिया मैडम जी ने संक्षिप्त में याता मैम उप्रेती के जो व्याख्यान था उसका विवरण प्रस्तुत किया और बहुत सरल करके सारे प्रतिभागियों तक उनकी बात को पहुंचाया। अंत में प्रश्न उत्तर और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांता। आपने बहुत ही खूबसूरती से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में जो हमारा पिछला सेशन था उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हम लोग पूरी रिपोर्ट कमेटी के आभारी हैं कि जिस तल्लीनता से और जिस कर्मठता से आप लोग ये काम लगातार पिछले 5 महीने से कर रहे हो, हम उसके लिए रियली तहे दिल से आप लोगों का साधुवाद करते हैं। अब मैं बिना वक्त जाया किए हमारे आज के जो स्पीकर महोदय हैं डॉक्टर बी महालिंगम, उनको आमंत्रित करूंगा। बट बिफोर इनवाइटिंग हिम, I'll just give a brief introduction of Dr. B. Mahalingam. Dr. B. Mahalingam is an associate professor assistant professor in Department of Geography, School of Earth Sciences, Central University, Karnataka, and he has obtained his PhD from University of Madras in 2015. He is having 10 years of teaching experience in the field of GIS and remote sensing. He was awarded with a Young Technologist Award, which was given by Union of Geographic Information Technologists, UGIT, Bangalore University, Bangalore. He has gone through about 15 training programs and he has presented 18 research papers in various international conferences, and he has published more than 30 research articles in various journals of national and international repute. He has conducted 3 training programs also. It is really beautiful to mention here that he is a person who has published more rather than attending the conferences. This is rarely seen in academia. We are really very happy to see you here. I just want to say to the participants that though this session is dedicated to map making, location map making through GIS, but don't think that this is only confined to the domain of geography. This is related, or this is even a requirement of all social science researchers. So please try to join hand-on training with Dr. Mahalingam, so that you will not depend on others for making your maps for your research projects, for your articles. You yourself will prepare your maps and your dependency will go away, and you will find it is very useful for your research journey. So very warm welcome, Dr. Mahalingam, and board is yours. Okay, thank you so much, Dr. Soni. Dr. Mahalingam, can you speak Hindi also? I'm not so good in Hindi, sir. Like, if you be a translator. Okay. I'll do that. You just time to time, just let me know. Yes. Okay. Okay. Can you see my screen, sir? Yeah, we can. Right. Good evening, everyone. In this 1.5 hours, we are going to learn about how to prepare a location map, which is also called as a study area map, using QGIS. So if I go to Google and if I search in the name of study area map or location map, we can see it provides hundreds of maps. So all these maps are providing the information or the location of our study area. So for example, you just see here they have mentioned location map of
Patwar region, and here they have mentioned some part of Tamil Nadu. For the Tamil Nadu, they have shown India first. Then after the India, they have shown Tamil Nadu. In Tamil Nadu, they have shown some part in which they have done the study. And the same way we can see here, they have prepared the study area map. And here also we can see like it's a part of United States of America. For that, they have prepared the study area map. So generally, when we do research, like we do submit our research papers or else our PhD thesis or MPhil or master dissertation. So when we submit our research thesis or the research paper to the journal, so generally we will show the area under our study in a map, right? So this is very useful for the people, those who are seeing our research studies from other countries. So the people, if anyone sees this map from England or from USA, right? So they can easily understand the study area belongs to which part. So by seeing this, they can say, okay, this guy is studying somewhere in southern part of India, so he is studying in the northern part of this state, in the northern part of the state, this is his study area, right? So this is not only for geographers, all the social studies people, we use it, right? So even like if you have done some sampling for your research, like through the questionnaire survey, if you want to show the location of the places where you went and where you have collected your samples, or the sample villages or the sample households, so that can be shown as a point information, and we can prepare the location map, right? Right. See here, before we start the work, we will assign some kind of task to us, so which will help us to understand more clearly about the work what we are, or the thing what we are going to learn today. Right. So we will assume that we have done some kind of poverty assessment in 4 taluks in Bhilwara district in Rajasthan, right? So our kind of work is assessment of poverty in Asind, Sanpura, Gangapur, and Mandalkar taluks in Bhilwara district in Rajasthan state. So when we do this study, when we want to show our study area to other people, or people from other Karnataka, or people from West Bengal, or people from Odisha, so they may not know where these taluks are located, right? Even if your thesis, PhD thesis goes to Australia or New Zealand, they may not know where the Rajasthan itself. So to make them to understand where our study area located, so we use the study area map. Here we see first we have shown the India. So for that I have given the title Rajasthan in India. That means the highlighted parts shows the Rajasthan state in Indian boundary. Then from that I have given you an arrow mark which shows the part which is highlighted here. So that here we can see the districts of Rajasthan state, right? So here I have highlighted the district of Bhilwara district. So again, from here I have made an arrow in which I'm going to show the taluks. In among these taluk, I have highlighted the taluks which I have studied. So this is the map generally called as a study area map, or some other people they say location map. And this map is used to represent the place of the study under ours. See here, like I can show you some research paper where they have already used it. So here I'm going to the Elsewhere website. In Elsewhere website, I have taken this journal, right? So here, when I scroll down, we can see the study area map. Here they have used the study area map. See here, they have said location of study area. See here they have shown the entire country. In the entire country, they have highlighted the place of study. Then they have given an arrow. Then this arrow represented the bigger image or the larger image of their study area, right? So we will see how to do that in today's class, right? Before in final output of today's class, we should have the image like this, right? So before going to start the hands-on training, I would like to tell you what are the things we will cover today. Sir, before that, shall I translate what you have please, said? Please sir. महालिंगम सर ने बताया कि जितने भी शोध होते हैं उन शोध में हमारा कोई न कोई कार्यक्षेत्र होता है। उस कार्यक्षेत्र को हम बहुत सारे तरीकों से दिखाने की कोशिश करते हैं और वो दर्शाना आवश्यक भी होता है, क्योंकि आपके द्वारा जो शोध किया गया है ये हो सकता है कि पूरे विश्व के किसी भी कोने में जब किसी के द्वारा
रेफर किया जाए या किसी के द्वारा उसको पढ़ा जाए, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये शोधार्थी कहाँ की बात कर रहा है। तो ये काम हमारा बहुत आसान हो जाता है जब हम लोकेशन मैप्स जो हैं वो हमारे रिसर्च पेपर या हमारी थीसिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर प्रस्तुत करते हैं। सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और फिर बताया, एक एग्जाम्पल लिया तमिलनाडु का और बताया कि किस तरह पहले भारत का मानचित्र बनाकर और उसमें तमिलनाडु दिखाया जाता है और उसके अंदर फिर तमिलनाडु का कौन सा एरिया, तमिलनाडु के नदन पार्ट का कौन सा एरिया जो है जिसका अध्ययन यहाँ किया गया है उसको दिखाया जाता है। और उसके बाद में उस क्षेत्र की बारीकियों को भी हम विभिन्न रंगों से या विभिन्न पद्धतियों से, विभिन्न छायांकन विधियों से प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में सर ने ये बताया कि यदि हम एक स्टडी एरिया का मैप बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया राजस्थान से, कि राजस्थान में यदि हम गरीबी का असेसमेंट करें, गरीबी का मूल्यांकन करें, और यदि हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के 4 तालुक लें, आसिंद, शापरा, गंगापुर और मांडलगढ़, यदि हम इन तालुक्स को लेते हैं तो किस तरह का मैप हमें बनाना चाहिए। उसमें सर ने बताया कि जैसे पहले आपने पूरा एक इंडिया का मैप लिया जिसमें आपने राजस्थान को हाईलाइट किया, तो आपने मैप का शीर्षक रख दिया राजस्थान इंडिया, अर्थात राजस्थान इन इंडिया। बाद में आपने देखा कि आपने उस जिस पार्ट को राजस्थान इंडिया के मैप में हाईलाइट किया था उसको आपने बड़ा करके अलग से एक बॉक्स में दिखाया, अर्थात आपने राजस्थान, केवल राजस्थान को एक बॉक्स में दिखाया। तो आप बड़े एरिया से छोटे एरिया पे आ गए। अब राजस्थान में आप कौन से जिले में काम कर रहे हैं उसको उसमें हाईलाइट कर दिया, क्योंकि आपको जिलों की बाउंड्री चाहिए थी, जिलों के हिसाब से मानचित्र चाहिए था, तो आपने मैप दिया डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। फिर बाद में आपने यहाँ पर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट कर लिया। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आपके सारे स्टडी एरिया हैं, अर्थात आपके जितने भी तालुका हैं वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने फिर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को और बड़ा करके दिखाया और उसमें तमाम जो तालुक थे उनको आपने हाईलाइट करके दिखाया कि यहाँ पर ये शोध जो है वो किया गया है और जितनी भी जानकारी है वो इस पार्ट को बिलोंग करती है, अर्थात इस पार्ट की विशेषताओं की चर्चा हम इस पेपर में करने जा रहे हैं। बाद में सर ने एग्जाम्पल दिया कि हम यदि कोई भी वेबसाइट उठाएं, यदि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन जर्नल्स हैं, यदि हम उसमें जर्नल्स में उठाएं, सर ने एक एग्जाम्पल भी दिया जिसमें एक यूरोप का मैप दिखाया हुआ है और उस यूरोप के मैप में दिखाया हुआ है कि ये एक कंट्री है पोर्चुगल, स्पेन के पास में, उसका एक पार्ट शोध के लिए लिया गया है। तो सर ने दिखाया कि किस तरह से पहले एक साइड में मैप दिखाया गया जिसमें ये दिखाने की कोशिश की, यदि आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखो तो ऊपर देखो ग्रेट ब्रिटेन का एरिया दिखाया हुआ है और उसके नीचे यदि आप देखो तो फ्रांस और स्पेन और पुर्तगाल का एरिया दिखाई दे रहा है। तो पुर्तगाल के एरिया में एक ऊपर का भाग जो है जिसको शोध के लिए शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया था उसको हाईलाइट करके और एक किसी रिलेवेंट फीचर को उसके अंदर शेडिंग, जो एक ही कलर की अलग अलग शेड्स होते हैं उसके द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है और जो कलर मैकेनिज्म है उसके लिए इंडेक्सिंग भी यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से हमारे शोध के अंदर जब हम अवस्थिति मानचित्र या लोकेशन मैप देते हैं तो हमारा शोध जो है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है और हमारे शोध क्षेत्र का जो परिचय है वो और ज्यादा आसान हो जाता है। थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन। Thank you, sir. Right. So to prepare the map like this, so we have to know the things like what is GIS and what is QGIS and how to collect the save file from the web. So first we will, these are all for 1.5 minute I will discuss. First we will discuss what is GIS, what is QGIS and how to collect the save file from the websites and what is save file. Then how to open the save files in QGIS. Then we will discuss about this QGIS software interface. Then we will discuss about how we will give the symbology in QGIS. Like you may have seen the black color on the map, right? In other maps you have seen they have used the different colors. So we will discuss about how to give the map different colors for the maps and how to give the labeling on the maps, then how to prepare the layout. Then finally we will prepare the final layout, and the prepared final layout we will export as a PDF file, right? Then what is GIS? So GIS is a kind of system which is used to collect the data. Like generally we use GPS or on the total session kind of our satellite
Satellites is used to collect the data or the capture the data. So this capture the data using the GPS or satellite or the total session will be stored in a hard disk. So this stored information will be used for analysis in the software. Then this information also can be used for model, or it can be managed, and it can be displayed. Finally it can be represented to the people, those who need this, right? So GIS kind of the system which is capturing the information of earth surface and stores the information, and it analyzes the information collected. Then we can create the model and we can manage the data we have collected, and we can prepare the maps and we can display it, and as well as it can be presented to the needy person, right? Then when we want to work with the GIS, what are the things is necessary or without which we cannot use the GIS? To use the GIS, the first we need hardware, which is a computer, or we can use our mobile phone, or we can use our tablet, or there are different devices are existing called as a PAM top, right? So we need the hardware first. Once we have the hardware, and the software should be installed in this hardware, right? So there are different kind of softwares are there that we will discuss later. So once you have the computer or the hardware, and if you have the software, then we need the data inside of this software to work with that, right? So if you have the hardware like computer, if you have the software like QGIS, and if you have the data like India's state boundary, then we need the skilled people. We need the skilled guy who can operate the software, as well as who can evaluate this data in this hardware. So the person who does not know the knowledge, or does not have any information about the GIS, cannot handle it. So that's why we need the skilled people to handle the data in GIS. Then we need the method and procedure. So which method we are going to use to do some analysis, or which method we are going to use to create the location map, so that we have to frame it. Then finally network comes in the view. So network means like kind of internet what we use, right? It can be a LAN network, or it can be a WAN network. So when we want to collaborate work with the other people, those who are living in other places, then we use network, right? So these are all the basic components of GIS. Without any one of these, we cannot perform GIS work, right? So when it comes to the software, right, when we discuss about the hardware can be your desktop computer, or it can be your laptop computer, or it can be your mobile phone, or it can be a tablet, or it can be a PAM tab, right? So when we come to the software, these softwares can be classified into two different manner, or two different broad category. One is open source or freeware, for which we do not pay money. Like for free of cost, we can download from internet, or we can obtain from the seller, right? The other one is commercial software, for which we have to pay money. Like these all comes in lakhs together, right? So the advantage of open source softwares are we do not spend any money. Easily we get it, and we will install in our hardware, then immediately we can start to work. So if you see the open source or freewares are QGIS, OpenGem, OrbisGIS, and Saga. So I have given few examples. So there are hundreds of open source softwares are available. Among that, the popular or well used by the people is called as a QGIS software, right? So when we come to the commercial software for which we have to pay money, so that is ArcGIS, GeoMedia, MapInfo, Pro, and Global Mapper. Here I have given only few commercial softwares. There are hundreds of softwares are available. Among that, ArcGIS is one of the top commercial software which is used in market as well as in the research field, right? So we know what is hardware, what is software, and we are going to use the hardware. Here I am using my laptop as a hardware, and I'm going to use the QGA software, which I have already downloaded from the internet. Then I have installed it in my computer. Here I have it. So I hope all of you may have installed in your computer. And here, third, we need data, right? So when this GIS has developed like almost 30 or 40 years time in India, so we were not having any data which can be used in GIS. So during that time, we have developed or we have created the data ourselves. All the data like we create in GIS. But nowadays, like all these data are already prepared, and it is available through online, or it is available in some government offices, or even in the private company, they are having this data. So instead of creating data once again, if you approach this government organization or private organization, we can get the data from them,
right? So there are few websites from where we can download this data for free of cost. So for this exercise, for today's exercise, I'm going to use two data or two information which I have downloaded from the internet. So the link for the data also I have given in the PDF. When you can when I share the PDF or this PPT file with you, you can also go to the same website to download the data, and as well as I have shared the data already with you, so that data you can use it for this exercise, right? So when I want to get the village level data, like village level save files, right, or the vector data, so you may not understand what this save file is, but don't get confused. I'm going to download some data from internet which will be used in GIS software. So when I need the village boundary, so I can go to this website. So this website I have already opened here. So this is given by Earth Data, um, controlled by NASA, and there they are providing the data, socioeconomic data and application center. In this, when I search village map of India, village map of India, here they are providing the data, India village level geospatial socioeconomic data set version 1. When I click on it, and here I can read about the information, how they have prepared and what are the information they have given, or when you use this data, how you have to cite this, everything is available here. Then when I click on data download, here I can see there is a option to download it. So when I click on it, I can download it by the state wise. So that data I have stored here. That data I have stored here. See, this is the data. Here we have village wise save file or vector data, which is around 25 MB or 26 MB. So you can download and you can use it, or else I have already given this data I have not given to you because we are not going to use the village data. This I have not given you, but there are websites from where you can download the village wise save file for your study area, right? So this is the one website from where you can download village wise save file for anywhere in India. Then there is another website called DivaGIS. So these people are providing the save files or the vector data or GIS data for entire world. See here, when you click on this link, or when you type this link in this URL, immediately it will go to this particular page. So here you can select for which country you want to need the save file or vector data. So do you want for Afghanistan or island of Ireland or Albania, like this, for all the countries they have given. So when you select India, in India, what kind of information you want? Do you want administrative areas or inland water, roads, or railroads, or elevation? What information you need? So based on our requirement, we can select and we can click on OK. For time being, I need administrative areas, which is the district, taluk, or state boundaries. So I can keep this in the administrative area. Then I can click on OK. So when I have clicked on OK, immediately the file will be downloaded. So that is the file what I have here, which is almost 14.5 MP file, right? Then another one is IGS map. So this IGS map is here, right? So this is the link, and here we can download the boundaries of India, the state boundary of India or outer boundary of the India. So here they have given the link, download India boundary save file, India state boundary save file. So when you click on it, immediately you will start to get download and it will be stored in your hard disk. So in the same manner, I have downloaded these three files, right? So here we have the village level save file, and here we have district and taluk level save file, and here we have the state level save file. So we should keep in our mind one that, so when we download this data from the internet, or when we get the data from someone else, so these data may have lots of errors in it. So before we use this data for our purpose, we have to correct the errors in it. So for example, I have downloaded this data from NASA, village level I have downloaded, and here IND India admin, which is I have downloaded from this GIS website, and this is from this IGS map. So as this India admin map is provided by Americans, so they do consider only the national boundaries, so in which we may not get this kind of OPK or COK, right? So we have to be very careful when we use our Indian boundary map, so which is accessed by our country.
right? We cannot use this Indian admit state which I have downloaded from this Diva.js, that I will discuss very detailedly later, right? So these are all the folders what I have downloaded from internet, and when I open it, I can see there are lots of files are there, right? See here we have CPG, here we have DBF, here we have PRJ, here we have SPN, here we have SPX, the extension of the file I am saying here, or else you just see here in the type CPG file, DBF file, PRJ file, SBN file, SPX file, SHP file, and SHS file. So when we collect the data for a single, okay, Navin, do you want to ask any question? Please raise. Someone raised their hand. Sir, question we will take at the end. Okay, sir. Okay, okay. Right? But the moment you will give me the permission, I'll just translate, because we'll translate say after every 5-10 minutes. Okay, you can go ahead, sir. So that people will be with us, right? Yes, yes, you can go ahead, sir. Okay, then please take this slide of your lecture plan. या इस लेक्चर को सर ने इस तरह डिजाइन किया है कि सबसे पहले इसमें थोड़ी सी बात की जाएगी कि जीआईएस क्या है और क्यों जीआईएस क्या है, और उसके बाद चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से शेप फाइल्स जो हैं उनको हम वेबसाइट से कलेक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, शेप फाइल्स होती क्या हैं, और फिर किस प्रकार से इन शेप फाइल्स को हम QGIS पर ओपन कर सकते हैं, किस तरह से हम QGIS इंटरफेस अर्थात शेप फाइल्स के साथ में हम किस तरह QGIS पर उनको यूज कर सकते हैं, फिर हम सिंबोलॉजी इन QGIS की बात करते हैं, लेबलिंग किस तरह से होती है डेटा की QGIS में उसकी बात करते हैं, लेआउट विंडो की बात इसके अंदर हम करते हैं, इस लेक्चर में करेंगे हम, और फिर हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लेआउट वो कैसे तैयार करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि जब हमने बना लिया है कोई भी मैप तो हम उसको किस तरह PDF फाइल के अंदर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि जहां पर हमें उसको यूज करना हो हम उसको यूज कर सकें। इस पूरी जर्नी के अंदर जब हम बात करते हैं कि GIS क्या है, तो इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि हम यदि बहुत संक्षिप्त में बताना चाहें तो GIS क्या है। यहाँ एक मोबाइल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, वो GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इसके द्वारा या और भी बहुत सारे डेटा कैप्चर मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा हम GIS में सबसे पहले डेटा बैंक बनाते हैं, अर्थात हम सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको हम हार्ड डिस्क दिखाई हुई है उसके आगे, उसमें हम उस डेटा को सेव करते हैं। आपको पता होगा कि GIS के डेटा जो हैं वो बहुत सारे सोर्सेस से आ सकते हैं, वो GPS से लिए जा सकते हैं, वो रिमोट सेंसिंग से लिए जा सकते हैं, वो पहले से जितने भी काम हुए हैं उनको यदि वो डिजिटल हैं तो उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, और यदि वो इंटरफेस डेवलप करके, और यदि वो डिजिटल नहीं है तो भी हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और फिर QGIS के साथ में इंटरफेस करके हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं। इस तरह डेटा बहुत सारे स्रोतों से आ सकता है, फिर उसको हम हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके द्वारा मैप्स बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक मैप दिखाया हुआ है जिसके पास में एक यूजर दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम अपनी आवश्यकता की जो चीज है अर्थात हमारे जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम मानचित्र उसमें से अलग से ले सकते हैं, अर्थात हम जो हमारा कंसर्न है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जो सर ने बात की वो की कि GIS के कंपोनेंट्स क्या हैं। आपको पता होगा कि ये सारे की सारी एक्सरसाइज कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड होने का मतलब ये हुआ कि हमें इसमें किसी न किसी प्रकार के हार्डवेयर की जरूरत होती है। वो एक लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, पाम टॉप हो सकता है, वो टैबलेट हो सकती है, वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई मशीन हमें चाहिए इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, है ना। तो ये सबसे पहली आवश्यकता है हमारी। दूसरा जो कंपोनेंट है कि उस मशीन में फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना जरूरी है जिस पर हम काम कर सके। जैसे आज आप ये देखोगे कि किस तरह से हम लोकेशन मैप बनाते हैं, तो आप बात करोगे कि QGIS की सहायता से हम किस तरह से बनाते हैं। तो QGIS ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है
जिसका हम आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि यदि हम जीआईएस में किसी भी प्रकार की मैप मेकिंग एक्सरसाइज के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरी जो आवश्यकता होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। इसके बाद में हमें फिर ये होता है कि हमें क्या दर्शाना है, कहाँ के लिए दर्शाना है, तो उसके लिए हमें डेटा की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हमारे पास में डेटा नहीं है तब तक फिर हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें वास्तव में करना क्या है, क्योंकि पहली दो आवश्यकताएं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, लेकिन तीसरा जो इनपुट है वो डेटा है। अब जब हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, तो अगली बात ये आती है कि हमें स्किल्ड पीपल चाहिए। जैसे आज हम सब लोग इस लेक्चर में बैठे हैं, तो हमारा मूल ध्येय क्या है कि हमारे पास में हार्डवेयर है तभी हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास में सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन हमने उसका डाउनलोड लिंक बताया आपको, जिससे आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो अब हमारे पास में सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। अब रिसर्च के हिसाब से आप तय करोगे कि आपको डेटा कहाँ का लेना है, वो भी आप एकत्र कर लोगे। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम अपने आप को स्किलफुल बना रहे हैं, अर्थात हम ये स्किल सीख रहे हैं कि हम इस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा जो हमारे पास में है उसको लोकेशन मैप बनाने के लिए किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अर्थात यदि हम ये इस तरह की क्लासेस नहीं लेंगे, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो यही काम हम हायर करेंगे, अर्थात जो स्किल्ड लोग हैं हम उनको हायर करके और लोकेशन मैप उनसे बनवाएंगे। उसके बाद में मेथड और प्रोसीजर की बात आती है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सूचनाएं चाहिए, किस तरह का प्रदर्शन आप चाहते हो, तो उसके आधार पर आपका मेथड और प्रोसीजर तय होता है। और लास्टली ये जो सारी सूचनाएं हैं, इसको ठीक है आपने अपने अपने कंप्यूटर पे उसको बना लिया, लेकिन लास्टली आपको शेयरिंग के लिए, जैसे आपने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि लास्ट में ये होता है कि भाई अब ये पीडीएफ फाइल है वो हमें दूसरे इंटरफेस के साथ शेयर करनी है, क्योंकि जैसे आपने पब्लिकेशन के लिए अपना आर्टिकल भेजोगे जिसके अंदर मैप आपको लगाना है, तो निश्चित रूप से फिर आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। बिना नेटवर्क फिर वो शेयरिंग संभव नहीं हो पाएगी। इसके बाद सर ने बात की थी सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर्स दो तरह के हैं। एक जो सॉफ्टवेयर्स आपको खरीदने पड़ते हैं, जिनके लिए आपको पेमेंट्स करने पड़ते हैं, और दूसरे वो सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप, यदि आपके पास में हार्डवेयर है और यदि आपके पास में नेटवर्क है, तो आप उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। QGIS के लिए जैसे कि हमने आपको आपके साथ में शेयर किया था कि कैसे आप QGIS को अपने सिस्टम में अपलोड करके तैयार बैठे रहिएगा आज के लेक्चर के लिए, ताकि आप सर के साथ साथ आगे बढ़ सको। मुझे उम्मीद है कि हमारे ज्यादातर जो श्रोता हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसको डाउनलोड किया होगा, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और आप ये समझ भी गए होंगे कि इसको आप इतना आसानी से बिना पेमेंट के डाउनलोड इसलिए कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये फ्रीवेयर और ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है। कुछ और नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये इतने ही नहीं बल्कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसी प्रकार सर ने बताया कि जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आर्क जीआईएस जो है उसका यूज होता है, लेकिन उसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे और ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जिनका इस्तेमाल जीआईएस के लिए, मैप मेकिंग एक्सरसाइज के लिए किया जाता है। इसके बाद सर ने बात की डेटा की, और सर ने आपके सामने एक स्लाइड रखी थी और आपको ये बताया कि किस किस तरह से, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप ये डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी आपके क्षेत्र का पब्लिक डोमेन में है और वो इजीली अवेलेबल है। तो आप उसका इस्तेमाल करके और उसको यूज कर सकते हैं। तो जो शेप फाइल की बात है, वो यही वो डेटा जिस रूप में आपको मिलता है, यही शेप फाइल्स हैं जिनके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हैं और आप अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड और सेव करते हैं, और बाद में मैप मेकिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ सर ने बताया कि हम यहाँ 3 स्टेजेस पे डेटा ले रहे हैं। विलेज डेटा ले रहे हैं, तालुक और डिस्ट्रिक्ट डेटा ले रहे हैं, और स्टेट बाउंड्री मैप्स ले रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया भी था इसको, क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में जो सर ने बात की थी कि हमें सबसे पहले वाइडर एरिया दिखाना है। तो उसके लिए जैसे हमने हमारे देश में यदि हम शोध कर रहे हैं तो हमने कंट्री में स्टेट की बाउंड्रीज दिखाई, फिर हमारा किसी एक स्टेट से जिससे हमारा कंसर्न है हमारे रिसर्च का, उसको हाईलाइट किया। फिर हम उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, हमें जो तालुक और डिस्ट्रिक्ट का डेटा चाहिए उसकी बात की, और फिर उसके अंदर वेरिएशन दिखाने के लिए हम और नीचे विलेज डेटा पे गए, और वहां से फिर हमने इन सब का इस्तेमाल करके हमने हमारी रिसर्च के लिए
लोकेशन मैप बनाने की कोशिश की। ये सारी एक्सरसाइज हम इसमें करते हैं। सर प्लीज कैरी ऑन। Yes, sir. Right. When I have downloaded this data from internet and a single file, which is we generally say vector file or the save file, so it downloads with several supporting file. So in this case, if you see, it is CPG file or DBF file, PRJ file, SBN file, SBX file, SHP file, and XNS file. So totally there are 7 files. We can see here there are totally 7 files. So when we download a data or a vector data, it downloads in the 7 file formats, right? So here this SHP file, this file stores the information of the geometry, like whether it is a point, line, or polygon, or rectangle, or square. So the geometry of these vector data will be stored in SHP file, and this the next one is DPF file. So the necessary information of this SHP file. So you may not understand what it is, then I will come back again here after opening the data in QGIS, right? So here I have opened the QGIS. Sir, is there any way I can hide this bar, sir? Sir? Sony, sir? Just a minute. Sir, this cursor is from your part. Yes, yeah, this bar is on the window. This you can please share your screen, sir. Yes, I'm doing, sir. Do you see my screen, sir? Yes, we can. So I want to hide it. Which one? This bar. Is it possible? But please see, this is the desktop of your computer. Yes. So first you please click on the file which you want to share. Yeah, now we are only seeing the file which you want to share. Do you see my QGIS window, sir? Yes, we can. Yes. Okay. Then I will go ahead. Sorry for that. Right. So here, this is the QGIS interface, and here we see lots of tools are here. See here, we can see the small dotted lines in the left hand side of this bar. So if you want to bring this anywhere, we can change it, or we can keep it anywhere. We can bring it, and we can change its location. Right, so here we have lots of tools, right? These are all the tools which is available in the interface for easy accessible of our data, right? So there are lots of tools are available in QGIS. So all the tools are not available in the front end. So this, even though these tools are available, it is kept in the back end of the software. Whenever it is necessary, we can open it in front end. To open the software in the front end or to close the tools which is already existing in our window, we can right click here on the top. Here I'm doing right click, so I can see what are the panels and toolbars are available in QGIS, right? So the same way you can also right click on the top window, then you can see the panels and toolbars available. See here I have the layer panel which is already switched on. When I click on it, see here the layer panel which was available here, now it is closed. See here this layer panel. If I remove this, the layer panel will be closed. If I switch on it, again it will be appear. So here we have lots of tools are opened. When you click on this one by one, the tools which is appear on here will be disappear. See here I'm removing one by one. Right. So when you want these tools once again, then we can switch on it, all the tools, then we can bring it here. So we do not use lots of the tools most of the time. So whenever it is necessary, we can bring it from the back end and we can keep it in the front end. See, these tools are also possible to keep anywhere on your menu bar. You can track it and keep it here, or anywhere you can keep it on the desktop. Right. So now I have downloaded the data from the internet. One is for village, one is for district, and taluk, the other one was state boundary. So how to add that data inside of this software? In Word file, what we do, if you want to insert any images or the video, so we go to the insert and we will click on picture. In the same way here, to add the data, we have to go to layers,
then we have to say add layers. So when I see add layer, I can see add vector layer, add raster layer, add mesh layer, add delimiter layer. So these are all the different file formats which can be opened in this QGIS software. The data what I have downloaded in the vector format, or in other word I can say it is a save file format. So I am going to add the layer which is in vector layer. So a new browser comes. In the new browser we can see all different layer formats are there. So among that vector is selected, which means that I'm going to open the vector data. So if the raster is highlighted, or if you select the raster, then we can collect the raster data here. So I click on the vector, then I want to define where my files are there. So by clicking this browse, I'm going to the folder where I have stored my information. See here it is in raw data download. Then I'm going to village India geospatial data. Here we see CPG, DPF, PRJ, SPN, SPX, SHP, and SHX. If you see the name of this, all the files are same except the extension of the file. That means all these files are representing the single file, but with a different extension. So here the mandatory files are .shp file, which shows the geometry of, or stores the geometry of the file. And here we have DPF file, which stores the attribute information of the area or the non-spatial information of it. Then here we have the PRJ. PRJ stands for projection. So if you have any projection of in your data, that will be stored in this file. And we have CPG file, which is called as a index file. The information of this save file will be stored here. So when you download this data, you should understand that you should have SHP, SHX, XSP, and SBN, DBF, and PRJ, and CPG. So if I open the other folder, here I may not have all these things. Like I will go to the other folder. See here I have only these 4 files, right? So one is SHP, this is for this India states. I have PRJ, DBF, and SHG. So here these 4 files are called as a mandatory files. These are very important. Without these files, we cannot open the data in QGIS. See here the extra files, whatever we have here. So we have this SBN, and we have this XBX. So these are all called as optional files. Even if you do not have these files in the vector data, you can open and you can analyze it. So now I open the data of Indian states. See here, even though there are 4 files are there, I know that .shp file is the file in which geometry file is stored. So if I open this India state SHP, then I can open all other files with the SHP file. So I click on open, then I click on add. The data is added here. So when I close here, we can see the India boundary here. Then I am adding the other layer, add layer, add vector layer. So this time I'm going to add India admin, which I have downloaded from DivaGIS, right? So this is provided by US people. Like here we can see admin 0, admin 1, admin 2, admin 3. So here this admin 0 represents the country's boundary, admin 1 represents state boundary, admin 2 represents district boundary, and admin 3 represents taluk boundary. So just I open the admin 2, which is the district boundary. Right. Here we see the district boundaries of our entire country, as well as there are some mistakes on the top. See here in the Kashmir. So we do not get the full Kashmir how we define, right? So because as these files are developed or created by these American people and they have shared in their country's website. So when you get this kind of the data, we have to be very careful, because we do not, Indians, we do not use this map, and so we should not use this data, right? Right. So now we have the district boundary, and because we are going to study only Rajasthan, so we do not care about the north part of the country. Then we have other data, which is for taluk wise boundary. Right. So here we have taluk wise boundary as well as district wise boundary, and we have sorry, I have opened the different file. Same file I have opened. I have to open the different one.
Okay, so here I have taluk boundary, then I have district boundary, here I have the Indian state boundary, because there are lots of districts are there are lots of taluks are there. How I can know which taluk it is or which district it is? So these informations are stored in the attribute table, right? So to open this attribute table, and as well as we have studied the dbf file, the dbf file in our data stores this information. When I right click on this, and I can get the one pop-up window. On the pop-up window, there is an option called open attribute table. So when I click on this open attribute table, there they have mentioned all the information related to this polygon. See here they have mentioned the country name India. In the India, this, okay, or else just I will show you here. See here, totally I have 2,299 polygons or 2,999 taluks. So when I select one row here, you can see there is one polygon is selected, right? So what this one polygon represented? So it is in India, and it is in the state of West Bengal. It is in the district Birbhum, and the taluk name is Suri, right? So all these informations are stored in the attribute table. So using attribute table, we can prepare the map or thematic map what we need, right? Here we have the other tools, and I need one more tool called map navigation toolbar, using which I can move or pan everything. Here we have the tool called zoom full. When I click on the zoom full, we can see the entire country here, right? So now we have the data, or we have downloaded the data. Now our work is we have to create the thematic map. Sony sir, if you want to take, you can take it, sir. Okay. नाउ अब हम यदि बात करें कि हम इस QGIS के ऊपर किस तरह से मैप्स को बनाएं, डेटा का इस्तेमाल कैसे करें। तो जब हम इसको डाउनलोड करेंगे डेटा को इंटरनेट से, तो ये जो फाइल्स हमारे सामने आएंगी किसी एक ही क्षेत्र की, वो 7 प्रकार की फाइल्स हमारे सामने आएगी, और ये 7 प्रकार की फाइल एक ही प्रकार के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम इनके एक्सटेंशन को देखेंगे, वहां पर हमें अलग अलग नोमेनक्लेचर मिलेगा। पीजी फाइल्स, डीबीएफ फाइल्स, पीआरजे फाइल्स, एसबीएच फाइल्स, एसबीएक्स फाइल्स, एसएचपी फाइल्स, एसएचएक्स फाइल्स, ये बहुत सारे नोमेनक्लेचर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे एक्सटेंशन के रूप में। वहां से हम जब ये देखेंगे कि ये बहुत तरह का डेटा है, तो कौन से फाइल्स हैं जो ऑप्शनल हैं और कौन सी हैं जो मैंडेटरी हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शेप फाइल्स, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया की, मैप संबंधी इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया की, बाउंड्रीज वगैरह की, उनके पॉलीगन्स की। तो इस तरह के डेटा इसमें होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो फाइल्स हैं वो डीबीएफ फाइल है। डीबीएफ फाइल ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर जो एरियल यूनिट्स हम देखते हैं शेप फाइल्स के रूप में, उनसे संबंधित जितना भी एट्रीब्यूट डेटा है, वो सारा का सारा एट्रीब्यूट डेटा, एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन वो इन डीबीएफ फाइल्स में होती है। इसके अलावा पीआरजे फाइल्स और एसएचएक्स फाइल्स, ये फाइल्स मैंडेटरी फाइल्स है। इसके अलावा एसबीएच, एसबीएक्स और पीजी फाइल्स हैं, वो ऑप्शनल फाइल्स के रूप में जो बहुत तरह से काम आती हैं। फिर हम जब बात करें QGIS में, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम QGIS के को ओपन करते हैं, तो बहुत सारे हमारे सामने उसकी जो मेन विंडो आती है, उस मेन विंडो में जैसे हम वर्ड ओपन करते हैं या पावर पॉइंट ओपन करते हैं या एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम QGIS को ओपन करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं सामने। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे सुंदर बात है, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो पैनल्स और टूल बार्स होते हैं, उनमें से हम हमारे हिसाब से, हमारे यूज के हिसाब से, हमारा ये जो मेन हमारा जो बोर्ड है QGIS का, इसको हम एडजस्ट करते हैं। अर्थात जो हमें पैनल्स चाहिए होते हैं, टूल बार चाहिए होते हैं, उनको हम फ्रंट पे ले आते हैं, और बाकी जो है वो पीछे रहते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उनको वहां से लेकर और हमारा काम करते हैं।
फिर इसमें सर ने बताया कि हमें इसमें यदि कोई भी मैप्स वगैरह बनाने हैं तो सबसे पहले हमें लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और जब हम लेयर्स पे जाएंगे तो वहां के एक ऑप्शन आता है ऐड लेयर, और ऐड लेयर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो लेयर्स हैं, जैसे सबसे पहले हम वेक्टर लेयर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल फॉर्मेट्स हैं, वेक्टर शेप फाइल्स हैं, उन सबको धीरे धीरे हम इसमें ऐड करते हैं, और उसमें ऐड करने के बाद में हम उसकी सहायता से जो जो हमने ऐड किया है उसी के अनुरूप फिर हम अलग अलग तरह के मैप्स बना सकते हैं। हम पूरे कंट्री के मैप के अंदर स्टेट्स को दिखा सकते हैं, हम स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के मैप पे जा सकते हैं, और हम उससे भी नीचे हम इसमें तालुक्स को भी दिखा सकते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। Thank you, sir. Right. So here we see the save file or the vector data of our states, and this about this state we have the information in attribute table. So here when I see these Indian states, so here in the attribute table they have given the name of each state. So here we can see the Karnataka, here we can see Jharkhand, and here we can see Jammu and Kashmir, here we can see Bihar, right? See here each polygon in the map is connected with this row. So when I click on Orissa here, I can see the Orissa is highlighted, right? So that means this attribute table is connected with this polygon, right? So using this connected information, I can create the thematic map or I can label it. So for in 30 seconds, I will show you how to create the thematic map. So it will be useful when you use with your data, right? So here we have the selection tool, like using which you can select any polygon, and we have here unselect or deselect feature. If you have selected any polygon, using this tool we can unselect it, right? So now I have the same color for all the states. I do not want to keep the map like this. I want to use the symbology to show each state in a different color. So here to do that, I have to go to the properties by right click on it. Then here we have lots of option in the layer property window. Among that, like we can see, one is symbology and another one is label. So these two things we will use in this today's lecture. So the first one is symbology. In symbology, it says I'm already showing your data in a single symbol. I say you do not want to show my data on the map in single symbol. You just say show in categorized. Then this tool, as I will categorize your states and which value I have to use it. I am saying you use the value called STNM, which is in my attribute table. In the attribute table, I have this STNM column in which I have stored the information of these state names. Then once I have given, I say classify it, then system shows that I will show this color for Andaman and this color for Andhra Pradesh and this color for Arunachal Pradesh. So if you want to change this color, we can double click on it and we can change the color. Then I feel it is okay for now. So I can click on OK. See here we have the thematic map which represents the states of a country in different colors, right? So here we see only the maps boundary, but we do not know which state, what is the name of the states. So in that case, we can use the label option. So to activate the label, I go to the properties again. In the properties, I say labels, you label it. So in default, it says no label. So I say you make one single label. So then system asks, I will make you one single label. What column I should use it in your attribute table? In attribute table, I have the column name, the name of st underscore nm, and use that name column name to label it. And I say, okay. See here we can see the names of the states inside of it, right? So if you want to prepare the simple map like this, you can prepare like this, you can print out. And we have lots of option in the labeling, like you can change the color, you can change the font, or if you want to make the mask and everything is there, later you can go through this and you can perform it, right? So I will remove this thematic map and the label on it. So again, I will come to the symbology single, then label is no label, then I will go with, right? So this is a simple map which shows states of country, and I do not want to show all these in my layout, like my final layout window.
or my location map, because my study covers or my study is located in the Rajasthan state. So in that case, I want to highlight only the Rajasthan state, and I have to keep all other state in a same color. So when you publish your research paper in a uh, well recognized journal or very popular journal, so they usually print in the black and white format. If you provide a map with different colors, they will send you back saying that change the color of your map into black and white and send to us, right? Or else we can use the different pattern instead of showing different colors, right? So that's why I prefer to create the map in black and white, so it will be accepted by everyone. So in this case, I want to show that Rajasthan state, then in a different color than other states are in the same color. So I prefer black for Rajasthan and white for other states. So to do that, I'm going to the symbology. Now I'm saying I want to give the symbology for the states, then based on the categorized of state name, then I say classify. So here software says that, okay, you have given the column name from your attribute, and here these many states are there. Now I say you group all these states here. I need only the Rajasthan, except Rajasthan, you group all these things. To group it, I have to right click on it, then I say merge categories. See, which was above the Rajasthan was grouped together. Now I'm going to group the things which is in the below then Rajasthan. Now I have one group below the Rajasthan, one group above the Rajasthan. I use control on the keyboard and I select both the group. Now again I say merge this category. Now I have one category which combination of all the districts in Rajasthan, and one more is only for Rajasthan. So here it says that you want to show the color for all other which does not comes in group. So I do not have any other which does not comes in group, then you can remove it. Now I say for the other group which is other than Rajasthan, right, I double click on it, sorry, I double click on it, on the color. Here we can see symbology selector. In symbol selector, I say simple fill, then fill color should be transparent. Fill color should be transparent. Then I click on OK. But here in Rajasthan, I have the different color. I do not want this color. I need the black color. So I double click on the small box. Then I go to simple fill. This time in fill color, instead of going for transparent, I am selecting the black color. Then I click on OK. So here we have lots of options are there, how much width you need and how much whether you want in point pixels, or what kind of line you want, or how your this corners of your polygon should be look like, or how much offset we have to provide. Everything is available. So after some time you can sit and see one by one, you can practice it. I say okay. See here I have one group of polygons with the white color, the other polygon of Rajasthan in black color. I say okay. Here we can see the polygons which is other than Rajasthan is white. Now only the Rajasthan is black. So now I have prepared the one map, right? I can show you. See here, here I have kept our final layout map, right? So here this map I have prepared. So the base of this India I have prepared. Now I have to prepare this map in which I will show the district boundaries of Rajasthan. In that I will show the selected district of Bijwara, right? So to do that, here you can see the tick mark. When I tick this, the map will be visible on the screen. When I remove this tick, the map will be disappear. So now I want to create the, or I want to extract the polygon of this Rajasthan Bilwara. So if I go to the attribute table, so here they have given the name. One is name, which is the in country name. Another one is Bihar, which is state name. Here we have the district name. Here we have the no, only till district we have. Here we have the district name, right? So what is our district? It is Pilwara. We will see where it is. Or else, just a minute. Okay, districts in Rajasthan. Okay. So here I want to select the districts in the Rajasthan. So here we have the state names, which is Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal, Jharkhand. So to select only the Rajasthan, I can scroll down.
Here we see the Rajasthan. So I can select the Rajasthan here. Okay. So when I have selected here, here you can see the districts in the Rajasthan is selected. Did I select correctly? Yes. See, the districts in the Rajasthan is selected from the entire India. To save this as a separate layer, right? I do not want to keep it in the entire India because it is joined with the other districts of the country. To save this as a separate layer, I right click on it and I export this. That means only the selected will be exported. Then in the export, I say save as feature as, then file name. See, it is going to save in ESR, a save file format, the same format what we have downloaded from the internet. Or if you want to change into different format, you can change the format and you can export it. So I want to keep it in this ESR, a save file format. Then I export this. I am exporting the name of districts. Then here I save only the selected features. So if I do not use this save only selected features, entire country's district will be saved. But as I have used the save only selected features here, only the selected features will be saved in my new file. I say OK. And at the same time, I have add saved file to the map. So when I click on OK, here we can see now we have only the districts boundaries of Rajasthan, right? See, here we have entire India. We do not want entire India. We need only the district. So I have selected only district. Then I remove other districts of India by right click on it and removing it. So now we have entire India, in which we have selected only the Rajasthan state, and we have the entire districts. In the district, we have to select only one only one districts. Just a minute. Here. So that is, I think this is the district, right? So we will go and see what is the name of the district in attribute table. So this is Bhilwara, right? So we have the names in name 2, in only Bhilwara we need, right? So this information can be, or this column name underscore 2 can be used to prepare the thematic map or to provide a different color for this, right? So I deselect the layer, then I go to district boundary. Then here I say I do not want single symbology. I need categorized, and categories should be name 2, because can you remember, because the names of the districts was stored in the name 2 column there. So I select name 2 here, then I say classify. See here we can all the districts in Rajasthan. So we do not want all the districts, then we need only Bhilwara as our study district. So I group all the thing which is above this Bhilwara, as well as I group everything below this Bhilwara. Then I group these two different groups as a single. Then here I say this other district should not have any color. It should be transparent, and Bhilwara should have the black color in it. See here we have the districts boundaries of Rajasthan, and in that we have shown different color or black color or highlighted the study district. Then I want the taluks inside of this Bhilwara. So here we have the taluks of entire India, right? So in this, how to identify Bhilwara taluks? So I go to the attribute table. Then here we have state name, here we have district name, and here we have taluk name. So we can like when I double click on this name, we can ascending the order or we can descending the order. So I am ascending now. So now we can see it starts with A. Then I move on to Bhilwara. Yes, it is here. See here we have this many taluks, which is belongs to Bhilwara district. Now I have selected it. So once I have selected this, and I have to save this as a separate layer. To save this as a separate layer, I go right click on it, export save feature as. Then I am saving this with the format of ESRI save file. Then I am saving in the same folder in the name of taluks. Oh, sorry. The mistake what I have done was I have not switched on this select only layers. That's why I got the result of all the layers.
I do once again. This time I make sure I have clicked on save only selected features. Then I save in the name of taluks study. Then I click on OK. So we got the only the polygons or the boundaries of the selected districts. So now I do not want the taluks of entire country. So I remove this. Right. See, now we will go one by one. Now I have India. In India, I have selected the Rajasthan. Now I have districts of Rajasthan, in which I have selected only the district I am studying. Then I have the district, the selected district. In this I have the taluks, right? So these informations are already available in attribute table. See here, we have the taluks, right? So what we will do, and what are the study area we have taken, that is Asind. Where is Asind? It is here. This is here. Then Sapra, it is here. Then Mandalgarh, that is here. Then Gangapur, that is here, right? So what we will do, like the same way how we have done for entire country as well as for the districts, now we are going to give the single symbology for the selected or study areas, and for others we are going to make it blank, right? So I have selected this. To remove this selection, I click on this deselect. Deselect, right? I go to study area, taluk study area, and right click. I go to the properties. There I go to symbology. In symbology, I say it should be categorized. In categories, I am giving the value of name 3, in which taluk names are stored. Then I say classify it. Then we get this many information which is already stored in this attribute table, which is the name of the taluk, in which I want these are all one group, as in Salpur, Salpura, then Mandalgarh, then Kangapur. So this should be one group. I make it as a one group. The other I am making it into another group, right? So here this is going to be black color, the selected taluks. Then others is going to be transparent, right? Sorry, sir. Do you want to translate? You can please, sir. ओके, सर ने यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह से जो एट्रीब्यूट टेबल के हमारे डेटा होते हैं उसको हम ये देखते हैं कि वो हमारा जो पॉलीगन है उससे कनेक्टेड है। तो हम एट्रीब्यूट टेबल्स के अंदर जो सिलेक्शन करेंगे वो हमारे पॉलीगन्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब हमें पता है कि हमें एक मैप चाहिए जो वाइडर मैप हो, अर्थात इंडिया का मैप हो, और हमें उस मैप के अंदर केवल और केवल राजस्थान को हाईलाइट करना है। तो यदि हम एट्रीब्यूट टेबल में बाकी सबको ना लेकर केवल राजस्थान को लेंगे तो हमारे मैप में केवल राजस्थान ही हाईलाइट होगा। और सर ने उस एक ही एक्सरसाइज को 3 बार करके बताया कि किस तरह से सिंपल फिलिंग जो है कलर की, उससे हम कैटेगराइज्ड फिलिंग पे चले जाएं और उसके बाद में हम ग्रुपिंग करके और बाद में किस तरह से हम एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट मैप जो है वो तैयार कर सकते हैं। सर ने बताया कि यदि हमें थीमेटिक मैप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो एट्रीब्यूट टेबल है जो कि पॉलीगन से कनेक्टेड है ना, जो पॉलीगन्स के कनेक्शन के साथ बनाई हुई है, या यूं कहें कि एट्रीब्यूट टेबल से पॉलीगन बने हैं, तो वहां से हमें यदि थीमेटिक मैप्स बनाने हैं तो देखो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, अभी जो सर दिखा रहे हैं, यही एट्रीब्यूट टेबल है। और इस एट्रीब्यूट टेबल से ही आप ये तय करोगे कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। जैसे आपको केवल राजस्थान लेना था तो आपने सारे के सारे बाकी जितने भी स्टेट्स थे उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर राजस्थान में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप लिया। राजस्थान में जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप ले रहे हो, अब उसके अंदर आप चाहो तो आप सिंबोलॉजी यूज कर लो। जैसे सर ने एग्जांपल करके दिखाया कि इंडिया में किस तरह सिंबोलॉजिकली हम डिफरेंट स्टेट्स को दिखाते हैं, ऐसे ही हम राजस्थान में भी दिखा सकते हैं और फिर हम बता सकते हैं कि ये हमारा स्टडी एरिया है इस कलर का। लेकिन सर ने कहा कि ज्यादातर पब्लिकेशन में हम ब्लैक एंड व्हाइट मैप्स यूज करते हैं।
इसलिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट टेबल में जाते हैं और राजस्थान हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, हम क्या करते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा लेते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे सामने एट्रीब्यूट सामने आते हैं उसमें से जो हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सबको उसको हम सॉलिड ब्लैक कलर दे देते हैं और बाकी सबको हम ट्रांसपेरेंट कलर दे देते हैं। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग करके और उसको हम ट्रांसपेरेंट कलर कर देते हैं, नो फिल में आ जाता है वो। तो फिर हमारा केवल एक डिस्ट्रिक्ट हमें सामने दिखाई देता है। अब आपको पता होगा कि हमारे पास 3 तरह के डेटा थे। एक था स्टेट वाइज, जिसको इस्तेमाल करके हमने स्टेट को अलग किया। एक हमारा डेटा था डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसका इस्तेमाल करके हमने स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा को चिन्हित किया। और अब तीसरा डेटा सेट हमारा है तालुक वाइज। तो अब हम क्या करेंगे, उस तालुक वाइज जो एट्रीब्यूट है उस पर जाएंगे और उस तालुक वाइज एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे कि जो हमारे तालुक जो स्टडी एरिया में है केवल उनको ले लेंगे और बाकियों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, बाकियों को, क्योंकि हम कैटेगराइज जो उसको कैटेगराइज करेंगे तो हम 2 ही कैटेगरी लेंगे, एक ब्लैक और एक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टडी एरिया है उसको हम ब्लैक कलर से दिखा देंगे। ठीक है, और बाकी एरिया को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, या यूं कहें कि हम व्हाइट कर देंगे। ठीक है ना। तो उससे उससे क्या होगा, यहां पर जो टूल बार दिखाई दे रहा है सामने, यहां से आप बाउंड्रीज की जो अलग अलग तरह की बाउंड्रीज है उसको ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही हम ऐसा करेंगे वैसे ही हमें क्या होगा कि हमारे जो स्टडी एरिया का मैप है, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैप है, उस स्टडी एरिया में हमने कौन कौन से तालुक्स को लिया, ठीक है, जो हमारा कोर स्टडी एरिया है उसको हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखो ये कोई ज्योग्राफी की महारत नहीं है, ये सर ने बहुत ही एक सिंपल चीज बता रहे हैं सर, जिसमें सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये लोकेशन मैप हर एक रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी तक हमने इसमें किसी प्रकार की कोई एलिवेशन की बात नहीं करी है, किसी प्रकार की कोई अदर एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी है। सिंपल सिंपल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जो है उसको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें हमने पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप लिया। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में हमने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो हमारे स्टेट्स हैं उनको दिखाया और उसमें से जो स्टेट हमारे कंसर्न का है उसको हाईलाइट किया। उसके बाद में हमने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा पे हम गए, एट्रीब्यूट्स पे गए, तो क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एट्रीब्यूट केवल और केवल राजस्थान के लेने, इसलिए हमने बाकी सारे को रिमूव कर दिया, केवल राजस्थान को ले लिया। और उसके बाद में क्योंकि हमें हमें और ज्यादा, हमारी जो स्टडी यूनिट है वो और छोटी है, ताल्लुक है, तो हमने क्या किया, फिर केवल और केवल जो हाईलाइट किया था डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, केवल उसको अलग से एक एंटिटी के रूप में लिया, उसको थोड़ा बड़ा किया और उसके अंदर हमने क्या किया, ताल्लुक वाइज उसमें बाउंड्रीज बनाई और उस ताल्लुक वाइज बाउंड्री के अंदर जिन जिन ताल्लुक्स में हमने शोध किया है उनको हमने क्या किया, सॉलिड फिल कर दिया और बाकियों को हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली लोकेशन मैप बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इन मैक्सिमम केसेस सोशल साइंस रिसर्च में, मैक्सिमम केसेस में हमें यह देखने को मिलता है कि हम किसी न किसी विशिष्ट क्षेत्र को चुनते हैं और उस क्षेत्र को दिखाना हमारे लिए महाभारत हो जाती है। और यहां पर इतना सुंदर तरीके से सर इसको इतना आसान तरीके से बताते हैं कि जिस काम के लिए आप महीनों भागते हो, वो काम यदि आप यहां पर थोड़ी सी हैंड ऑन ट्रेनिंग मजबूत कर लो तो वो कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए, वो जानकारी जो लोकेशन मैप बनाने के लिए है, वो जानकारी ऑलरेडी सारी अवेलेबल है। और आपको पता होगा कि ये जो लोकेशन मैप बना रहे हो ये आपका शोध नहीं है, ये तो केवल आप स्टडी एरिया से परिचय दे रहे हो। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट की चर्चा करोगे। तो जिस तरह से आपने इसको दिखाया है वैसे ही बहुत सारे मैकेनिज्म है जिससे आप एट्रीब्यूट्स को आप अपने स्टडी एरिया के मैप्स में दिखाकर और अपने प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो। ठीक है, और ये कंसर्न जो है ये केवल और केवल ज्योग्राफी में नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी स्पेस का अध्ययन करता है, इसलिए ज्योग्राफी में निश्चित रूप से हम स्पेस की चर्चा टाइम एंड अगेन करते हैं। लेकिन किसी भी शोध को यदि हम सोशल साइंस में करते हैं तो हमें कम से कम एरिया इंट्रोडक्शन तो देना ही होता है, जिसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। सर प्लीज कैरी ऑन।
Thank you, sir. So now we have shown our steady area in black color and other taluks in white color. But now it is necessary to show the name of the taluks on the boundary of it. See here in our map, we have shown it, right? So now we have to show this name of the taluk on the top of the polygon or the boundary or on the taluk. So this method is called as a labeling or annotation, right? So people use the term labeling as well as annotation to do that. So we have already seen the in the properties there is a label below this symbology. So I go to label, then here I say I need only the single labels, and system asks in which field you are having the names. So I'm having the taluk names in the field called name 3, and I click on apply. So here we can see the name of the taluks on the taluk boundary. Sorry, but we cannot see in the polygon because label is black color as well as this polygon also in black color, right? So if I change the color of it, if I change the color of it, then we can see the name in all the polygons. But my need is I want to show only the name of this selected taluks, not other taluks. So in that case, we should have a field in which I have only the name of our selected taluks. So to do that, so I'm going to the attribute table, because the information what I have downloaded from internet, right? The vector file or the save file, whatever I have downloaded from the internet. So these are all having these default values what was developed by them, right? So here they are having all this information. So now I need only the name of my selected taluks in a new row. To do that, I can create the new column here. To do that, I should click on this pencil tool or toggle editing mode. So when I click on it, some of the tools which was hidden here will be appear, right? So I click on it. Then here we have two tools. One is new field, another one is delete field. So when I click on delete field, the delete field whichever is created already by the other people can be deleted. So for example, I don't want this name, variable name 3, and this int type I don't want, and type 3 also I don't want, and id I don't want, id 2, this other information other than this name 3 I do not want anything because it's the name of the taluks. Then after selecting this, I click on OK. See here, now we have only the one row, or sorry, one column in which the name of the taluks are available. Now I say I want one more column in which I am going to type steady taluk. So here in steady taluk, what is the type of the information you are going to type in the cell? Whether it is a whole number, or it is a whole number in 64-bit, or it is a decimal number, or it is a text, or it is a date. So I'm going to type the name of this taluk. So it is going to be a text. Then I click on OK. So here, this is my steady area. So I just copy this from this column. Then I paste it here. Then Kangapo is my steady taluk, so I copy and paste it here. Then this Mandalgarh is my steady taluk, copy and paste it here. Then this Saulpura is steady taluk, I copy and paste it here. See here I have only the name of my steady taluks, then others are null. So this null will not be displayed when we give the label on the polygons. So once I have created this, I click on the toggle editing once again to stop editing. Then software asks, do you want to save your edited information? I say yes, because I have deleted lots of rows, as well as I created one new column. In that I have typed my study area name. So I say you want to save it. So I click on save, it is saved. So now we see go through this Jahaspur, because we have given the taluk names previously. That's why we see all the names. Now I say you do not use this name 3, you use the new column which is steady taluk, in which I have only the information of names of the steady taluk. So when I say apply, see here only the taluk in which I have the information in attribute table is visible. So other polygons are null. I feel that instead of having this color in red color, so if I have in white, that would be good. So or else if I have in black, that's also good. So I have it in black color. Now I cannot see the label here.
So there are some options are available and more options are available, which is a buffer or mask. I can use buffer, so which will create the buffer around the word or the letter in it. So see here, now it looks, because the white color buffer we have given, because the buffer color we have given white here. So now we can see this very clearly, right? So we have all the base layer, which is Rajasthan in India, and selected district in Rajasthan, and selected taluks in the district, right? So using these three, we are going to prepare the final layout, right? To prepare the final layout, we have to go to the new window. That window is called as layout window. To open that new window, I have to go to project. Then here we can see a new print layout window, right? This is the window in which we are going to add all this information to prepare the final study area map. So when I open this, it will bring a new page, right, in which you have to give the name of your print layout window. So if you want to type anything, my map or something, you can write it, or else you can also leave it blank, no problem. I click on OK. So it brings me a new page where I have to create the final map, right? So first I want to keep the India here. To keep the India, so I am zooming India, right? To do that, I right click on it and I say zoom to layer. Now I can see the entire India. In entire India, Rajasthan is selected, and as well as I see the labels here, which is not necessary for my India map. So why it is coming? Because it is coming because I have switched on the taluk study. So if I remove this or if I hide it, it will be uh, hidden, right? So I keeping only this India, right? I am adding the map in the layout window. So keep in mind that whatever you have in your working window in QGIS main software will be displayed in your layout window. To add it, I have to go to add item. Then I say there are lots of add items are there. Among that, one is add map. So what this add map? This add map adds the information in your QGIS main window. As I have only the India in which Rajasthan is highlighted, that will be shown here. Add map. See here, I create the small square in the left hand side top to see the India here. See here, I have made a square this much, but the India looks very small inside of it. So this is based on the scale of the map. See here, when I create here we can see the properties or item properties, which is related to the frame of here. So here you can say the scale of the map is this. So if I reduce this, then I can see the India very clearly. So I keep on reducing the scale. Okay. So now I feel the boundary as well as the visibility of India is okay. Or else if you want, we can increase it. Right. So I keep it, this frame is okay for me. Then I want to give the frames, right? To provide the frame as well as the other information, the latitude and longitude information, I click on this India, then immediately I can see the item properties. See here, when I click on outside, no informations are available. When I click on this India, I can see the more information related to this available. In this, when I come down, I can see an option called grids. So when I extend this grid, I can see a new box in which there is a one plus icon using which I'm going to create the grid, right? So I click on it, then software develops a one grid. So in this grid, I'm going to give the property for this. To provide the property for this, I have to go to modify grid. So when I click on the modified grid, I get the new options. In this, we can see the solid, cross, markers, frame, and annotation only. So for time being, I keep it solid. Then CRS and map units, you can leave it default. Then I provide the interval of these grids as 5, then in x-axis, then 5 in y-axis. See here, we can see it has created the grid. Now we will change it. So now we have the solid grid. So if I change it into the cross, we can see only the crosses has been created and it is highlighted. If I change this into the marker, we can see there are some markers are created. So we keep it for time being solid, then finally we will remove it. So once it is finished, then I come down there, I say I want frame for this square or this map. So here there are lots of options are available. Among that, I prefer zebra. You can select anything you want when you work with your data. See here, it prepare the zebra.
Then I calm down, then like we can change the width of this frame, height, everything we can, colors and everything we can change. And down there is an option called draw coordinates. So these coordinates will label, or it will be show the latitude and longitude of the position. So I click on the draw coordinates. Here we can see the latitude and longitude of it. But generally I do not prefer like this, because these are overlapping on one another, and as well as it doesn't give much information on it. So that's why I say don't show in decimal, use so decimal with suffix. So here we can see the northern and southern northern hemisphere and eastern hemisphere. It comes with the north and east information. And as well as if you see here, after the 20 we can have lots of decimal numbers. So that decimal numbers can be reduced by coordinate precision. I say I do not want any precision, right? So now the map looks much better than how it was previously. As well as I do not want to keep this 5, 10, 20 in horizontal, so we can make it in vertical, which may look much better than what we see here. So in left axis I am saying I do not want to keep it in horizontal, you just make it in vertical. In right side also I do not want to horizontal, you can make it in vertical. So now we have got the India map and with the frame and latitude longitude. Now I want to remove this grid because I do not prefer these grids generally. So again I go to grids. In grids I modify the grid. Then inside of the solid I keep only frame and annotation. See here, now we have got the India and as well as a frame and latitude longitude of it. So further we have to show it is necessary when we prepare the map, and we have to sure that we are adding all the map elements. So the map elements are north arrow, scale and grids and title and legend of it. So now I want to add the north arrow here. To do that I go to add item, there we have the add north arrow. So I select this option, then just left click and draw a box. So here we have the north arrow. Then I need the scale for it. I go to the add item, again add scale bar, then I add it here. Now we see like we cannot see anything information, like it is overlapping. So what I do here, the informations of this, like whenever I click on any object on the screen, I will get the properties of this in the right hand side window. See here, now I get the information related to arrow. When I click on the scale, so here I get the information related to this scale. So I say here, you do not want to keep two right hand side bars, you keep only one, and you keep the scale for 500 meters, 500 kilometers, not for 500 250. So here now we see the scale much better than what it was previous, it was looking previously. And okay, we have to give the title, what it is, what we have zoomed here, or what we have highlighted here. So here we have highlighted Rajasthan in India. To do that I go to the add item, then I go to add label, then I create the box here. And when I have created the box here, it is highlighted as well as its property is highlighted in the item properties. Here they have given the default name. Then I say I do not want default name, I need Rajasthan. Down of that I need India. So then we can see the properties of it, the font and other properties. I feel I want to change the font, so I click on this font. Then here I type Times New Roman because I prefer Times New Roman. It is person to person may differ. You can select what you like. I need Times New Roman. It should be in bold and it should be in 10 size. Then here there are the options are there. Do you want to keep this in the center or left or right? I select the center. I need it in center, and it has come in center. Then I can use these dots to minimize the size, then bring it here. Right. So now we have prepared the map of India in which we have shown the Rajasthan. Now we have to show, or if you want to move it, then you just select all the properties or object here, then you can move it. So we have to be sure that when we prepare this map, it should be locked, because so this window shows the images which is in our main window of QGIS. Once I have switched off this India from this main window, the image which is appear here will be disappear. To make this as a permanent here, I have to log this layer. So I select this, then I click on log layers as well as log styles for layers. So once I have brought this, then I go to the main window. Here I remove the India states, then I
click on districts of Rajasthan. So as there is a small size, I right click on it, then I say zoom to layer, right? Now I come to my layout. Here I can see that my India is not disturbed. Then I go again, add item, then add map, then I draw a box here, and in which I can see this map which is visible in working window of QGIS main window. So that is the district wise of Rajasthan. So here I will change the scale, like instead of now I feel it looks a little better than what was previous. So I go with this scale. The same thing I'm going to give that label or this grids. To do that, I go to grids and I'm adding the grid, modify grid. Then it's going to be solid because I want to know what is the interval it gives. Here I go with number 2. Okay, 2 looks gooder. Good. 2, or we can go with also 3 or 4, or how we, okay, no, 3 will be good. I provide 3, then I say I need the frame, that is a zebra. Then I also need coordinates. Then coordinates should have its suffix of northing and easting. Then I do not want decimal precision. Then this left side label should be vertical, and right side also should be vertical alignment. And I do not want to keep the solid, I want frame, right? So now we have created district wise map of Rajasthan state, and that we have highlighted our study area. Now add the north arrow, then I add scale. So I keep only one, or else I will go with 200 unit. Okay, now it looks better. Then I have to add the title for it, in which I have to write name of the study there, which is Bhilwara district. Bhilwara in Rajasthan. I am changing the font into Times New Roman, and it should be 10 and it should be bold. Then I am making it into center, and I am keeping these in the left hand side top, right? So now we have shown India in India, Rajasthan, then Rajasthan in Rajasthan we have shown the district. Now make sure you are making this layer as a lock layer and lock styles for the layers. So when we change the properties in the main window, it will not disturb our layout. So now I switch on the taluks, then I zoom this. Now we can see the selected taluks here. Then I go to the layout window. Here I want to show this in the big area because it's a main area in which I have to show the exact study area. So generally we keep this in the bigger size. So I go to add data, add map. Right. So here we have the map of our study taluks. Right. The same way I'm going to give the grids. Modify grid, and here I'm going to use 1. We will see how it looks, or we will go with 0.4 degree. It looks better than previous, so 0.4 degrees. And I want to give the frame, which is zebra. Then I should give draw coordinates. I do not want decimal, I need decimal with prefix, and I do not want to keep decimals. 1 is enough, right? 1 decimal is enough. Then I come back, then I need only the frames, I don't want the inner lines. Then this position horizontal should be vertical, here horizontal should be vertical. See, here we have created the map of taluks. Then I add the north arrow in the same way.
and I'm adding the scale bar. So for which I can increase the properties here. Instead of 1 unit, I can go 10 units. I can go with 50 size, whatever you like. It's all depends upon how what you feel, right? So now I have to give title. So I use add label. Then here I write study taluks in Bilwara district, right? So I change the font Times New Roman. It's going to be bold, and I'm increasing the size of it, and it should be in center. So I keep it here, right? So now we have shown Rajasthan state and the study district and study taluk. So generally you can leave it as it is, or if you want to show more effectively, then we can use the arrow here. Click here and bring it down. Left click, right click will create the arrow. Then again go there, click on here, left click, right click will bring you the arrow, right? So we can create the box on top of it. Here we have the add shape, add rectangle. I am adding the rectangle. These are all like we just decorate the map what we have created. So here in the style, I say the style color should be null, and border should be in some other color, whatever you want, like you can have it. Then I can add the label once again saying study area map. So for this I am making size Times New Roman. Size should be 30, 28. Right. So now we have prepared the map which shows our study area. So if it is in QGIS itself, it may not be useful. So we have to convert this, or we have to export to the other format. So for time being, I'm exporting this with a PDF that is available here in layout. Export as SVG, or export as PDF, or export as image. So image means the JPG file what we use. So for time being, I'm using as export as PDF. I'm exporting this with name of my new map, and system has some of the properties. You can leave it default, or else you can read it and you can choose whatever you like. Then I use the default and I am saving it. It is created. It is in my folder in the name of my new map. So here is the map what I have created, right, for now, right? So the beauty of the thing is that we have not spent any money. We have not gone anywhere to collect the data. So we have used the open source software, and we have downloaded data from internet by using some of our skills, and we have created this location study area map. So if you want to show the point like this, even we can show the points in this selected, like if you are having some household in this taluk, so that household also can be shown inside of this. Sony sir, please you take care. Okay. सी इस पार्ट में सर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि अभी तक हमने जो सीखा था, जो शुरुआत में सर ने बताया कि किस तरह से हम 3 तरह के डेटा लेके पहले जो हमारे जो स्टडी एरिया है उसका व्यापक क्षेत्र जो है उसको दर्शाने के लिए भारत के मानचित्र के अंदर हम स्टेट्स दिखाते हैं और उसमें राजस्थान को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद सर ने बताया कि किस तरह से हम उसमें से राजस्थान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट दिखाते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में से हम ले जाके और उसमें से जो स्टडी एरिया के ताल्लुक से उनको दिखाते हैं। फिर यहाँ पर सर ने हमें बताया कि किस तरह से हम इसकी लेबलिंग और एनोटेशन के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें जब हम लेबलिंग करते हैं या हम इसमें एनोटेशन करते हैं तो इसमें हम लोग, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम जैसे सिंगल लेबल के लिए यहाँ पे सर ने जाना हमें सुझाया और हमें एक एक करके दिखाया कि किस तरह से
हम लेबलिंग करने के बाद में हम उनकी कलर चेंज कर सकते हैं, हम बफरिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हमारा जो काम है, हमारा जो मैप है, उसमें हम जो दिखाना चाहते हैं उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, उसको विजिबल मार्क कर सकते हैं। फिर सर ने बताया कि जब हम ये सारा काम कर लेते हैं, हम जब एक, जैसे सर ने सबसे पहले बताया कि अब जब हमारे पास सारी सूचनाएं आ गई, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम अब इस पूरे के पूरे जो मैप है उसको फाइनल यूजेबल कंडीशन में लेके आना चाहते हैं। तो सर ने कहा कि इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में हम जो न्यू प्रिंट लेआउट है वहां पर एक नया पेज लेंगे, जो आपके सामने यहाँ स्लाइड पर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो पेज आपने आपने जो बनाया है, फाइनल लोकेशन मैप बनाया है, इसके लिए हमने एक पेज लिया और फिर हम क्या करते हैं, ऐड आइटम और ऐड मैप उसकी उस तरीके से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पहला मैप है उसको लेके आते हैं। देखो जैसे ऊपर ऐड आइटम पे सर ने क्लिक कर रखा है और उसमें से ऐड मैप दिखाया हुआ है, तो इसके तहत ही हम सबसे पहले जो सबसे पहला मानचित्र है जिसमें हमने पूरे इंडिया का मैप दिखाया है उसको यहां पर लेके आते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो ग्रिड है वो इस पर बनाने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो एरिया उसके लिए लिया, जो बॉक्स हमने लिया, उस बॉक्स के अंदर वो मैप छोटा या बड़ा तो नहीं है, तो उसके आधार से हम उसको एनलार्ज या रिड्यूस कर सकते हैं। कुल मिला के हम उसको बेस्ट फिट में ले आते हैं उस बॉक्स में जहां पर हमें उसको दिखाना है। नाउ व्हाट वी डू, अब हम इसके अंदर ग्रिड ऐड करते हैं। ग्रिड ऐड करते हैं मतलब कि हम इसके अंदर अक्षांश और देशांतरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। उस अक्षांश और देशांतरों को दिखाने के लिए, ग्रिड ऐड करने के लिए, देखो सर साइड में दिखा रहे हैं, उसमें जब हम उसमें ग्रिड ऐड करते हैं तो हम पहले इंटरवल देते हैं। ठीक है, ये देखो ग्रिड्स आ गई। इस ग्रिड्स को जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ग्रिड्स आ गई हमारी, तो यहां पर हमारे पास इंटरवल्स हैं। हमें पता है कि जब हम भारत का मानचित्र ले रहे हैं तो हम इंटरवल थोड़े बड़े लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 डिग्री का इंटरवल लिया, तो 5 डिग्री का एक पूरा का पूरा जाल, एक पूरा ग्रिड पूरे मैप के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन ग्रिड्स की लेबलिंग भी करते हैं। इन ग्रिड्स की लेबलिंग को भी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एडजस्ट कर सकते हैं जैसा हमारी आवश्यकता होती है। और इसके बाद में ये जो इसके चारों तरफ की बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री को भी, जैसे यहां सर ने जेब्रा बाउंड्री ली है, ठीक है, उसको हम हमारे तरीके से ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा पहला मैप हमारा तैयार होता है। अब हम क्या करते हैं, जब ये पूरा मैप बन गया तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ऐड आइटम में जाके और इसके अंदर हम नॉर्थ जो है वो इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो नॉर्थ जो है, नॉर्थ एरो इसके अंदर आ जाता है, तो मैप में नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम इसमें स्केल जोड़ते हैं। ठीक है, और स्केल को सर ने बहुत सुंदर तरीके से बना के बताया था। और उसने सर ने बताया कि ये जो स्केल आइटम है, इसके लिए हम नीचे जो जगह चुनते हैं, हम इसको एक बॉक्स में, है ना, हम इसको एक पार्ट में या दो पार्ट में लेके दिखा, या तीन पार्ट में लेके दिखा सकते हैं। जैसे हमारा जो इंडिया का मैप है, इसमें इसको वन पार्ट में दिखाया हुआ है, लेकिन हमारा जो राजस्थान का और जो तालुक मैप है, यहाँ पर इनको टू पार्ट्स में दिखाया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में कितनी मैप पे कितनी जगह है, और हम उसके उसके आधार पे साइड में सर इसको दिखा भी रहे हैं कि देखो हम इसके अंदर जैसे यूनिट्स क्या लेनी है, किलोमीटर लेनी है, माइल लेनी है, वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कितना बड़ा स्केल लेना है ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो वास्तविक स्केल है वो तो वही रहेगा, लेकिन हम उसके नोमेनक्लेचर को, उसकी लेबलिंग को थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं। हम इसको राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्केल में कर सकते हैं और उसको हम दिखा सकते हैं। उसके बाद सर ने कहा कि इसके बाद में हम क्या करते हैं कि स्केल ऐड कर दिया और फिर हम इसके अंदर एक टाइटल बॉक्स ऐड करके और हम क्या करते हैं, इसके अंदर टाइटल देते हैं। ठीक है, जैसे हम आइटम पे गए, आइटम पे मैं ऐड लेबल किया, ऐड लेबल करके और फिर हम दिखाते हैं कि ये जो पहला हमने इंडिया का मानचित्र लिया ये है क्या। तो एक बॉक्स आ जाता है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पर हम राजस्थान दिखा रहे हैं इंडिया में, तो उसको हम टाइप करके और फिर हम ये देखते हैं कि हम इसको मिडिल में लेना चाहते हैं, या हम इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, या राइट अलाइन करना चाहते हैं। दैट इज अप टू अस।
फिर हम इसके अंदर फॉन्ट चुन सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन लेना है या कोई हिंदी का फॉन्ट लेना है, वॉट एवर इट इज, है ना, उसको लेकर और फिर हम क्या करते हैं, हमारे मैप पे सुटेबल प्लेस में उसको ले जाके और हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से सर ने सबसे पहला मैप करके बताया। ठीक है, और इस प्रेजेंटेशन की ब्यूटी ये रही यहाँ पे कि जैसे सर ने पहली एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में हमें इंडिया के मानचित्र को बनाना सिखाया। अब सर ने क्या किया, उसके नीचे एक बॉक्स और बनाया और वो सारे स्टेप्स रिपीट किए जो इंडिया के लिए किए थे। बस हमने इसमें सिर्फ चेंज इतना किया कि हम हमारा जो हमारे पास डेटा है उसमें सिलेक्शंस बदल लेंगे। हमें इंडिया का मानचित्र बनाना था, राजस्थान हाईलाइट करना था, तो हमने उसमें सिलेक्शंस दूसरे लिए। अब हमें राजस्थान दिखाना है और डिस्ट्रिक्ट्स दिखाने हैं और उसके अंदर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट करना है, तो हम हमारे डेटा सेट के अंदर उसी तरह से इनेबलिंग और डिसेबलिंग करते हैं। ठीक है, और इनेबल और डिसेबल करने के बाद में जब हमारा फाइनल डेटा ये फिक्स हो जाता है कि हमें ये यूज करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, वापस वो सेम एक्सरसाइज करते हैं। हम ऐड आइटम पर जाते हैं, ऐड मैप करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐड आइटम पे गए, फिर ऐड मैप किया। ऐड मैप करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर हम एक पूरा स्क्वायर लेके और हम क्या करते हैं, उस मैप को उसके अंदर ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, एनलार्जमेंट और रिडक्शन की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, वो भी सर ने करके बताई दोबारा। ये ठीक वो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम जो हमने पहले मैप के लिए की थी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो नॉर्थ इंसर्ट करते हैं, टेबल स्केल इंसर्ट करते हैं, हम इसके अंदर टेक्स्ट जो टेक्स्ट का एक बार बना के और उसको इंसर्ट करते हैं। इस तरह से हमारा ये इंडिया में राजस्थान और राजस्थान में भीलवाड़ा, ये दो जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे दिखाने के, ये कंप्लीट हो गए। अब हमें हमारे स्टडी एरिया को थोड़ा डिटेल में दिखाना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा बॉक्स लेते हैं। बड़ा बॉक्स लेने के बाद में अभी अभी हमने चर्चा की थी, जैसे हम इंडिया को लेके आए थे और जैसे हम राजस्थान को लेके आए थे, ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब जो हमारा डेटा सेट है उसमें कुछ जो एरियाज है उनको इनेबल करते हैं और बाकी जो हमें चाहिए और बाकी को हम डिसेबल कर देते हैं। तो अब हमारा जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो हो जाती है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ताल्लुक बाउंड्रीज। उन ताल्लुक बाउंड्रीज में स्टडी एरियाज के जो चार ताल्लुक है उनको हाईलाइट करना, उसके अंदर लेबलिंग करना, लेबलिंग के अंदर यदि यदि जरूरत हो तो बफरिंग करना, और उसके बाद उसको हम ऐड आइटम में जाके फिर हम ऐड मैप करके और उसको यहां पर ले आते हैं। हम इसकी बाउंड्री डिसाइड, फिर हम क्या करते हैं, वो सेम हम फिर क्या करते हैं, ग्रिड में जाते हैं। ग्रिड में जाके और फिर हम क्या करते हैं, इंटरवल्स डिसाइड करते हैं। इंटरवल्स डिसाइड करते वक्त हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटरवल्स लेते हैं। अब क्यों, क्योंकि अब हमारा एरिया बहुत छोटा हो गया है। तो अब जैसे हमने शुरू में 5 डिग्री का इंटरवल लिया था, अब हम 5 डिग्री का इंटरवल नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, छोटे इंटरवल लेते हैं। उसके बाद में ग्रिड्स बनाते हैं, ग्रिड्स का लेआउट फिक्स करते हैं, उनको हॉरिजॉन्टल करना है और वर्टिकल करना है। बाद में हम क्या करते हैं, इसका पूरा जो आउटर बाउंड्री है उसको अलाइन करते हैं, जेब्रा लाइन जैसे सर ने ली है हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रिड है जो हमने बनाया था उस ग्रिड को वापस रिमूव कर देते हैं और बाहर जो ग्रिड का नोमेनक्लेचर है वो रह जाता है। इसके बाद हम इसमें नॉर्थ इंसर्ट करते हैं, हम इसमें स्केल इंसर्ट करते हैं और फिर टेक्स्ट बार लेकर और हम इसमें इस पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है उसका टाइटल देते हैं। जब इतना काम हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी लेआउटिंग करते हैं पूरे की। तो हम इसके अंदर पूरे जो हमारी पूरी शीट है उसका नॉर्थ ले लेते हैं। हम इसके अंदर हमारा जो पूरा टाइटल है जैसे स्टडी एरिया मैप, ठीक है, उसको हम इसमें ले लेते हैं। तो कुल मिला के हम इसके अंदर अब ये फाइनल मैप हमारा बनता है। ठीक है, और अब इस जब ये हमारा फाइनल मैप बन जाता है तो हम बाद में क्या करते हैं कि लेआउट में जाकर और हम इसमें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ये नीचे देखो ऑप्शन दिया है जिसको सर ने हाईलाइट किया है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो फिर वो हमें इस फाइल का नाम पूछ लेता है और ये आ जाता है इसको कहां सेव करना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइल का नेम देते हैं और फाइल का नेम देते हैं, ऊपर देख रहे हो आप कि ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में फाइल फोल्डर है जिसका नाम है क्लास डेटा, वहां पर ये जाके सेव हो जाता है और फिर हम इसको बाद में हमारी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर प्लीज। Thank you so much for your supporting and well explanation and transportation translation of my thoughts, sir. And like now you can ask any questions, sir. Now it's यस time सर, for यस questions, sir. सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर तरीके से ये एक एलिमेंट्री जो नॉलेज है जो मैप मेकिंग का, जो हर एक रिसर्चर को इसकी आवश्यकता होती है, सोशल साइंस के प्रत्येक रिसर्चर को इसकी जरूरत होती है, उसके बारे में हमारे जो प्रतिभागी हैं उनको बताया। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि इसमें से बहुत सारे लोग, करीब 100 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये 100 लोग यदि इस एक्सरसाइज को करना सीख गए और इस एक्सरसाइज को यदि इन्होंने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये मान के चलिए कि आज हमारा ये जो सेशन है उसका ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो जाएगा। क्योंकि यदि हम इस तरह के मैप्स के लिए यदि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यदि हम इनको खुद बनाना शुरू करेंगे, तो इसमें बहुत सारा फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हम जो दिखाना चाहते हैं, जो दर्शाना चाहते हैं, हम उसको एक्चुअल में मैप पर लेके आएंगे, उसको हम हमारे आर्टिकल या हमारे थीसिस या हमारे प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। क्योंकि बहुत सारी बार जब हम दूसरे किसी एक्सपर्ट से हम एक्सपर्टाइज हायर करते हैं, तो बहुत सारी बार हम जो चीज बताना चाहते हैं वो कई बार निकल के सामने नहीं आती है। और उसी की वजह से बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम जो चीज बताना चाहते थे, ठीक है, वो हम नहीं बताना चाहते, और हम बार बार यदि उस एक्सपर्ट को हम निवेदन भी करते हैं तो भी वो चीज कई बार निकल के सामने नहीं आती। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिसर्चर जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। लेकिन एक बार यदि ये टूल उसके हाथ में आ जाए, तो ये मान के चलिएगा कि इस टूल के आने के बाद में वो हेल्पलेसनेस जो है उससे हमें काफी निजात मिल जाती है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लूंगा और क्वेश्चंस के बाद में हम फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स की ओर बढ़ेंगे। तो अभी देखो, ये पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ये पूछा गया है कि सर वेयर दिस डेटा वाज शेयर्ड, आई डिड नॉट रिसीव। तो ये बात, ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारी चीजें शेयर कर ली थी। ठीक है, RAR फाइल्स इज नॉट ओपनिंग इन माय सिस्टम, ये भी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहा हूं कि कोई क्वेश्चन हमारे को मिले। जस्ट अ मिनट सर, सर प्लीज सेव हिज प्रेजेंटेशन। ओके, नो नॉट just a minute. Sir, there is one participant who wants to share the link of the village level data in the chat box. So if you are feeling free, please share this the link in the chat box for the village level data. So I do one thing, sir. I will share my entire PPT in which Okay. all the links are stored that you can share with your So, participants. yes, yes, that will be good. That will be good. And as well as like I know that it is not easy for the beginners, Yeah. because I have done lots of work within 1.5 hours, which may be very difficult for these newcomers. Yeah. So I have created the video also. That video also, like whatever I have done in this 1.5 hour, I have recorded it. That video also I can share with them. That's good. That's good. That's good. That's Yeah. good. If you will share that, then it will be very good for us. Yes, yes, because it will be kind of source for them. Like even after 2 years, if they want to do this Yeah. exercise, they can watch the video. They can do it. Yes, 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 yes. Yeah, yeah. And the one question is that how can this question is from Shubhendu Mukherjee, that sir, how can we get village, district, and state level data from same source? Like these are all based on the providers. Mhm. So it's a free of cost. We cannot tell anyone you have to provide, because they develop the data. So once they develop, when they feel that this data can be go for open source or it can be given for free of cost, so they upload it. But this Diva GIS, I feel they are giving for state boundary and district boundary and taluk boundary.
But only the problem is these people do not cover our entire north part of the India, so that's why we don't prefer it. No, it's very simple. Like if you need the data, even village level, no problem, just you go and click it, that's all. But no sources will not give us data in like from village to state, because I have not seen, I have not used it. But whenever I need data, like it's a very simple. I hope you are seeing my the desktop. uh, Here I type um, vector, or instead of, we will go very specific, I say save file of India free download, right? So when I say save file of India free download, like there are totally, there are this number of results are there. So we can go one by one. See here, download India village level geospatial economic data. And lots of videos are there, lots of thing is there, but I have not come across any website or any portal provides all this information. Mhm. But we can download from different websites. Okay, thank you, sir. Abhijit Sambal, uh, Abhijit Sasmal, he is asking that Diva GIS provides us province-wise vector boundary layer. Sir, please inform me that from which source we can get block-wise vector data layer of different districts in India. Just now you have satisfied this query, I think. If you want to say something, then please say. No, these are all based on the data provider. So I can show you one website, because to prepare the data itself, it takes lots of time as well as lots of manpower and lots of money. Yeah. So once the data is prepared, the organization, they should feel that it can go freely to the public. So if they are not ready to share it, sometime what happens, the data what they have prepared, they may not have accuracy in it. So because of these error issues, they may not share it. I can show you some website in okay, in which I can show you the information of Karnataka, Mhm. Karnataka State Remote Sensing Application Center. So like that, if you find anything, any website for your state or your district, you can get it. So here they are providing for Karnataka. I can show you. Let it go, sir. If there is any other question, please you can ask. Okay. And sir, one more question from Pawan Shukla. He wants Yes. to ask that how and from where we can learn full QGIS course. Um, there are lots of master degree and 1 year PG diploma courses are available. And even last time I have conducted one online free QGIS course, like it was 21 days and we have conducted twice. So you can join, if you are already working professional, like you can learn through online. There are lots of courses are available. You just go to Google and there you just type online GIS course. You will get lots of courses in Udemy, Coursera, and lots of online portals are there, like more courses you can join in it, and they may charge like 400 or 500 rupees. That there you can learn it. Or else there are thousands of videos are available in YouTube. You can watch the YouTube video as well as you can learn it. Or you can join some courses offered by NRSC or IARS or some branches of ISRO, and you can learn it. Um, but how we have learned it, like I am a geographer, like when I have studied, like 1 or 2 paper was there in my curriculum. But the thing is that because of our interest, we have searched lot in the website. So we may end up with lot of problems, like some steps we may get forget. So internet will provide you full support to learn GIS than any other teacher. So you just search lot in internet, you can get the video, you can get the data, you can get the software, and as well as you will get the help from other people, those who are working in the same domains. Thank you, sir. Shubhendu Mukherjee has again put this question, the same question that can I get data at for Blackwood. village, district, and state level from the same source? And sir already tell that you have to go for the various sources to get such information. And uh,
Okay. So there is one question that can we use raster data on study of area maps? Yes, we can do that, sir. Because I have not added this because it may take more time. That's why I have not showed you raster data and that. So we can show, like, even there are some of the portal which is already available. We can, here we have the option add WFS, right? So this we can even entire Google Earth can be bring into the software, or entire Google Map can be bring into the software. We can use the raster data. Yeah. And there is one more concern. It was put by Dr. BP Sharma. He said that इस प्रकार के व्याख्यान दोबारा करवाने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह के व्याख्यान हर शोधार्थी के लिए बहुत जरूरी होते हैं. तो बीपी शर्मा साहब, 10 नंबर बैठ खाली में एक बार कल फिर हम मिलेंगे, और कल प्रोफेसर मिलाप पूनिया जो जेएनयू से हैं, वो जियो स्पेशियल टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह ये जो सोशल साइंस रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है. क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था. एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक सोशल साइंस के रिसर्चर की कि वो लोकेशन मैप अपने रिसर्च के अंदर दे. और ये लोकेशन मैप हमें रिसर्च में और आर्टिकल्स में तरह तरह के देखने को मिलते हैं. उनमें बहुत सारी अशुद्धियां कई बार सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि रिसर्चर सही चीज जान रहा होता है, लेकिन वो जब किसी दूसरे एक्सपर्ट से काम करवा रहा होता है तो एक कम्युनिकेशन गैप वहां पर आ जाता है. और कई बार वो चीज जो रिसर्चर के माइंड में होती है वो उस फाइनल जो 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 मैप जो उसने बनवाया है किसी एक्सपर्ट्स में से उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती. तो आज का लेक्चर इस गैप को फुलफिल करेगा. एंड आई एम श्योर दैट आवर पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये पार्टिसिपेंट्स निश्चित रूप से अब आगे अपने किसी भी रिसर्च आर्टिकल के लिए, अपने थीसिस के लिए, अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अपने जो बेसिक मैप्स हैं, जो लोकेशन मैप्स हैं, वो खुद बनाएंगे. और सर, आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू हैव शेयर्ड बोर्ड विथ अस, and you have explained this entire this map making exercise through QGIS in a very simplistic manner, because it is not possible to cover all these things in just 45 minutes or 50 minutes or say 90 minutes or 2 hours, because it is we need to go for a long exercise to learn all these things. But yes, this is a window, this is a gateway which you have shown, and because you are sharing all this PPT and video and other information with us, so immediately we will circulate that in the group of participants, so participants will get benefit out of it. And now, to give the formal vote of thanks, I request Shri Om Prakash Ji Saini. He is the organizing secretary of this program. Please, Om Prakash Saini ji, आप please औपचारिक धन्यवाद करिए सर का. आज के वक्ता प्रोफेसर बी महालिंगम सर, आपका इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. सर, आपने बताया कि लोकेशन मैप आपके रिसर्च क्षेत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण है तथा GIS की मदद से कैसे इसको बनाया जा सकता है. सर, निश्चय ही प्रतिभागियों को रिसर्च में आप द्वारा बताए गए मेथड से लाभ मिलेगा. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. रिपोर्ट राइटिंग कमेटी कन्वीनर डॉक्टर रेणु पूनिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. दिनांक 21 नवंबर 2020 को हुए सेशन की हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ही रिपोर्ट प्रस्तुत की डॉक्टर चंद्रकांता ने. मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. आज हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में रिपोर्ट राइटिंग का कार्य कर रहे हैं शुभेंद्र मुखर्जी. सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. इस प्रोग्राम के पैटर्न, को पैटर्न, मेंटर, कन्वीनर डॉक्टर जेडी सोनी सर, डॉक्टर रविंद्र कुमार सर एवं समस्त ऑर्गेनाइज टीम का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. साथ ही इस प्रोग्राम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी आभार. पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार. धन्यवाद सर. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for inviting me, and as well as I thank Dr. Renu Purnima for calling me for this lecture, and as well as thank you so much for your translation, sir, because you have shared a lot of the things like within a small time. I really thank you so much for this. Say, because the presentation was from a geographer,
and I am also a geographer. So you know, the integrities, the terminology, we all familiar with that. So it was an easy task because of that. And so thank you very much. Thank And you so much, sir. with your due permission, I just want to end this meeting here. Yeah, thank you so much, sir. Bye bye, sir. Bye bye. Thank you.